Namaste and good afternoon to all viewers across the globe. Ladies and gentlemen, welcome to today's special webinar in the series India Now and India Here, organized by REACH with the amazing TAREK FATAH. REACH was incepted on 7th September 2019 with a cleanup of our Indian High Commission in London after it was attacked and vandalized twice by the Pakistani supporters post Article 370 abrogation. A group of volunteers cleaned up the High Commission on that day and took a pledge to ensure interests of our Bharat are always protected. Reach India stands for race, ethnicity, and cultural heritage. Our aim is to actively promote the unification of Indian culture and heritage. We have two simple objectives. First, to build and strengthen India's global image in our communities across the globe. Second, to raise awareness on Indian culture and history by actively checking and challenging any inaccurate information. We are committed to bring about a positive change by uniting like minded nationalists across the world. During this global pandemic, REACH members around the world are actively involved in various initiatives in their own communities, including organizing various online education sessions, informative webinars, and etc. In today's webinar, we will hear our esteemed guest, the amazing TAREK FATAH, on the topic of the lies of China and Pakistan, in which he has some factual and amazing insights to share with us. Now I will request Nandini ji, our moderator, to please introduce the esteemed guest for this special day, TAREK FATAH. Thank you. Thanks, Abhi. Namaste to all of you, and a warm welcome to all of you who are joining us via YouTube and Facebook. Before we start the webinar, The Lies of China and Pakistan, a brief introduction on our distinguished speaker, TAREK FATAH. TAREK ji honestly needs no introduction. He is a well-known personality in Canada, US, Europe, and the Indian subcontinent. He is a journalist, author, critic, and a prominent spokesperson for secular and progressive Muslim issues. He is the author of The Jew is Not My Enemy and The Tragic Illusion of an Islamic State. TAREK ji is an Indian born in Pakistan, a Punjabi born in Islam, an immigrant in Canada with a Muslim consciousness, grounded in a Marxist youth. TAREK FATAH ji was born in Karachi in the year 1949 into a Punjabi family which had migrated from Bombay to Karachi following the partition of India in 1947. TAREK ji graduated with a degree in biochemistry from the University of Karachi, but entered into journalism as a reporter for the Karachi Sun in 1970 before becoming an investigative journalist for Pakistan television. He was a leftist student leader in the 1960s and the 70s and was imprisoned twice by military regimes. In 1977, he left Pakistan and settled in Saudi Arabia before emigrating to Canada in the year 1987. In Canada, he was a long-time member of the Ontario New Democratic Party, and he unsuccessfully contested 1995 provincial elections. In July 2006, he decided to leave the NDP because of the entry of religious fundamentalists. From 1996 until 2006, he hosted Muslim Chronicle, a weekly Toronto-based current affairs discussion show on CTS and Vision TV, which focused on the Muslim community. From 2009 to 2015, he was a broadcaster on Toronto radio station CRFP Network 1010. TAREK FATAH was co-host of Friendly Fire with Ryan Doyle and TAREK FATAH from 2009 to 2011. From 2011 to 2015, he hosted the TAREK FATAH Show on the Sunday afternoon. TAREK FATAH has been a
critic of Pakistan. He has questioned the legitimacy of the state and has advocated support for Baloch separatists. He has criticized the partition of India, calling the division of the country tragic by departing British to create the new state of Pakistan. He is a critic of Sharia law. He is of the view that most of the Islamic radicalism that you see today stems from the empowering of Saudi based jihadi groups that were funded and backed by the USA and the CIA throughout the Afghan war against the Soviet Union. Tariq Fatehji is not liked by fundamentalist Muslims. However, Musalman means Musallam Iman, completely honest. Therefore, in my opinion, he is a true Musalman because he expresses his views on all subjects with utmost honesty. An absolute privilege and honor for us at Reach to have you with us, Tariq Fatehji. Welcome and over to you to start the webinar, The Lies of China and Pakistan. Namaste. Thank you. Namaste. Thank you very much for such a long introduction. Some of the things I didn't know. Not to worry. The problems we face today are enormous, not because they can be not recognized, but the fact that after 1990, the collapse of the Eastern Bloc or the Warsaw Pact, the Soviet Union, politics itself has degenerated into not ideas, but ancestries. So we all, whether we are in Congo or whether we are in Japan, South America, we look at our issues back into the tribalist days when one had to be loyal to one's headman or whoever we were supposed to be loyal to. It was an identity based on not what you thought, but where you were born and what was the color of your skin or the religion that your parents, what you inherited from your parents. So we have gone into an era of lack of intellect that challenges any scrutiny. So if I am, for example, a Chinese gentleman, I have to see India as my enemy, not because India is wrong, but because the Chinese state suggests to me that India is wrong, weak, and worthy of very racist views in that. Not that Pakistan and China, for example, are close in any way, ideologically or thought-wise, but simply a matter of greed and wealth, whereby two parties can come together and take over another party for no other reason than what it used to be in the 16th and 17th century. So the ascendancy of intellect in international affairs was a slow climb from the Industrial Revolution. You can imagine that when Cromwell was talking about the House of Commons, the Parliament in the UK, we had Aurangzeb in India burying people alive because they were not the right Muslims. So if we look at it that way, there was a convergence that happened between the industrialized Europe and its former colonies, and the main neutralizing force was the emergence of ideological states or state like the USSR that was based on anti-imperialism. So there was a slight retreat in the imperial or colonial empires. So large tracts of Africa were freed from tiny Portuguese in our lifetime, which we've seen. Our parents
saw the divisions of India, so that once India is freed, it should be lame. Similar things happened in China, where the two China policy emerged, and still the Kuomintang created Republic of Taiwan is being threatened by what's considered the People's Republic of China. As a background to this, I'm giving you the background because to discern what is truth and what is lies, one needs to understand this background. Today, what we have is the ultimate lie that could take place, which is Pakistan, is there with legitimacy and support from superpowers from the United States to China, Pakistan's ability to manipulate them, to now an emerging threat coming from Turkey in an anti-Arab Islamic front that links Turkey, Pakistan, and Malaysia. And all of this gets under the legitimate role that it is multi-party, multi-country alliances based on trade, whereas it is not. It is the re-emergence of 1,000 years of imperial Islamic conquering of territories and wiping out the indigenous cultures and languages of those places. And India seems to be the only place where, despite 800 to 1,000 years, the essence of the Indian civilization could not be wiped out despite invaders coming and ruling us. So now these lies that Pakistan has, which is primarily that we are the rightful descendants of the Mughal Empire, which was taken over by the British. And hence, when Mr. Owaisi says, "Ye dekh rahe hain aap hamare mahal aur ye sab," it is still retained in the mindset, in the genetic makeup of the northern Indian Muslim, that he or she is the rightful owner of Hindustan. And the Hindus of Hindustan, well, obviously, they are destined to be serving us because that's what they've done, not for 100, 200 years, but since Muhammad bin Qasim landed and conquered Sindh. So the lie that is told from the Pakistani side, I'll come to the Chinese side, or let me first talk about the Chinese side. China may share a border with India, but China is not a neighbor of India. You have to understand something, because just having a border doesn't make one a friend of the other. And that is the reason for that is that China itself never had a border with India. China occupied Tibet and thus expanded itself into Tibetan territory and East Turkmenistan to get to the Himalayan range. China had nothing to do. There were no Chinese living in the shadows of the Himalayas ever. They were more concentrated on the northern area, and their own traditions come from the Buddhist monks that fled from Nalanda University when Khilji destroyed it, I think in the 12th or 13th century. So China has never been able to be a neighbor like, say, Afghanistan is. That the Kabul merchant is in Delhi is part of our folklore, or the Sindhi or the Punjabi being part and parcel of what is a Bengali. These are neighbors, no matter irrespective of their religion. So Bangladeshi could be very comfortable in India. A Pakistani too, unless and until he still puts his nose up in the air, but get down to the bottom, deep inside, he does realize that he essentially was a Hindu who converted to Islam.
China doesn't have that. And China's entire policy towards India is a naked lie which allows it to take Aksai Chin or territories in Gilgit-Baltistan from the Pakistanis, or in the in northeast areas where they dispute China, India's sovereignty over there. All that is part of an imperial expansion of China, which it couches in terms of its own sovereignty. The goal of China is to reach the Arabian Sea and the Bay of Bengal. They tried it in 62 and almost made it to Calcutta. And now they have reached Gwadar, which is not very far from Mumbai, and have built a naval base over there. So it is not there to build Pakistan's resources, but China is essentially there to encircle India, because China sees India as its competitor, China being in the UN Security Council, with the sole aim of ensuring that India never gets there. And unfortunately, Indians play along by not realizing that they are not where they should be, because they are very content in what they are, and in a docile view to the world, they don't even look threatening to anyone. On the other side, you see China's ally of time, which is Pakistan, genuinely considers themselves as the rightful owners of Delhi, or the old Delhi, or the Jamia Masjid, or all the temples, masjids built over temples, whether it is Kashi or whether it is, Krishna's Janambhumi. Pakistanis, especially the Punjabi Muslims, and those Muslims who come from UP and Bihar and central provinces of Hyderabad, who migrated to Pakistan and imposed the Urdu language there, they genuinely believe that this is their rightful ownership. And the Hindus are their subservient second class citizens, and they have to be treated as such. So we end up with a situation where the only truth that exists is the Republic of India, but without the capability of India having, with India not having the capability nor the desire to rectify this lie. So you will notice that most anti-Indian literature printed abroad is by fellow Indians. It's not some Pakistani or Chinese who write against India. Whether it is on the cover of Time magazine, whether it is the Amnesty International fellow whose funding was cut, and so he shut the place off. And I recall that BBC just interviewed Amnesty, not anyone from the Indian government or from the state, that determined that there were multiple foreign accounts that Amnesty could not account for. So outside India, being a very introvert people, even the Indian diaspora doesn't act. You folks went over and tried to ward off the attacks by British Pakistanis on the Indian consulate there. That's a very rare thing. I can tell you there was a demonstration in Toronto against China, and there were about 15 to 20 Tibetans. There were even about, I think, 7, 8 Pakistanis there. And it was not a big demonstration. But what struck me is that there was not a single Indian there. For them, it didn't account for anything. उसमें अपना फायदा क्या है ये this thing. So you can have Khalistanis here right up the alley in the government, where the defense minister is a Khalistani, the science and production minister is a Khalistani, and the only Indian who's not politically involved with Indian affairs is a very respectable woman, but she will never speak on these issues. Even one of the leaders of the opposition is outright Khalistani from the left, the NDP. So the Indian government to the Indian
uh, diplomatic corps, to its armed forces, to everyone, does not give the image of an Indian respecting a fellow Indian or standing up for the truth. They portray the image that let let this go by, तो रोज का मसला है, we'll resolve it. Unfortunately, your enemies are hell bent on suffocating Indian civilization because it is the only surviving place. The Egyptians don't know what the script is, what was their religion before the Arabs came there. The Iranians, even the Zoroastrians who live in India, don't know what the script is. So you had an entire Iranian Persian civilization, that conquered way beyond their level, where they were having wars with the Greeks. And yet today, you won't find any Iranian knowing, well, how did we write before the Arabs came? So this irks the pan-Islamists, whether they are Indian citizens or whether they are Pakistanis, or within that range. The Arabs or the Turks couldn't give a damn, because in their eyes, brown-skinned people are brown-skinned people. They do not even consider us worthy of being friends sometimes. You'd be surprised if you worked in the Middle East, what sort of a treatment um, we as Indians or Pakistanis get from them. So leave them aside. But the attacks on India and India's position remain unanswered no matter where you go. And I'll close by giving you an example of the great gathering in Houston, the Modi and what's his name, Trump rally over there, Howdy Modi or something like that. We were trying to get a few Indians to stand outside to have a sort of miniature demonstration against Pakistan. We couldn't get 10 Indians. No, they all had, and their aunties had the invitations of VVIP, VIP, I will sit there, they will sit there. They couldn't do a demonstration. So you will be surprised that it was 10 Pakistanis who came forward to do an anti-Pakistan demonstration. Indians didn't want to come. So whatever Pakistan lies about India or China does, the fact remains that there is no response to it. And if you do not have an official response, the truth will, the lies of Pakistan, which are far more than what China can lie. China doesn't have to lie. China simply attacks India. And would you believe it that there was no coverage of that for at least a week anywhere in the world press? Because for 2-3 days there was no coverage even in India. And how can that happen? How can an Indian who's concerned about not India as a country because of its civilization, it's the only surviving civilization, to not be bothered to come out and say, what's going on? I could get 50 Pakistanis to defend India, but where are the Indians? Where is the diaspora? Where are the NRI folks? What is their role? You can't even come out and say to this fake black woman who's now discovered she had a Tamil mother, Sleepy Joe's vice president. Nobody can even confront her that for 40 years you denied any links to India. You were black, and now suddenly you found out that your mom came from Chennai. I'm talking of those areas. Look at other places. The congressman from Oregon, Ro Khanna, he sits in Congress in the Pakistan caucus. So these are not lies or truths or anything. This is a level of aggression against India at its roots, with the connivance of people who are capable, have the time, money to confront these lies, and who just stand back.
either because they're not organizational connected or something else divides them. But I've been to Washington and I've been with American Indians. Uh, I was disappointed in how the whole process is run. For example, the Hindu American Society is run by an Armenian fellow. I thought maybe he was an Armenian from Calcutta. He has never been to India, and he is doing that. They must a very capable fellow, but unless you want to give your time and money, there's no point in doing that. जो आप लोगों ने किया लंदन में, hats off to you, because I don't recall at any other time any generation has come out. And you look at the power of the Pakistanis, that the mayor of London is a Pakistani. And until recently, till in the current conservative cabinet, you got a few British-born Indians into the cabinet at very crucial positions. Whether it was a House of Lords or whether it was the member from Glasgow who became the governor of Punjab, you'd be surprised. There was no one. There was one Indian MP who used to, Keith was his name, I think. Yes. He was the only active person of Indian ancestry within the Labour Party. It was dominated by vote bank issues. And the Pakistanis have turned many British neighborhoods into Lahore, or worse. Lahore is a pretty modern city. I mean, they've made it into villages where the power of the muscular power of the Punjabi Dadagir, it rules. The girls are dictated. How many honored killings have happened in Britain? But I'm glad you folks are there and you're doing something about it. But there has to be a general awareness that we cannot ignore. We might even ignore the lies of China, because China stands exposed in front of the whole world and has. But the Pakistanis have been able to fool every other country. They've been sponsored by Saudi Arabia sometimes. It's like a concubine, pardon my expression, for rent. So sometimes the China, it used to be Iran at one time when the Shah was there. Pakistan was an Iranian puppet state. Then the Gulf states, the UAE's ruler used to literally live in Karachi. And slowly people understand what they're up to. This is not going to work. But the Indian diaspora has never, and one of the reasons is that, which I have discovered, that Indians have a general overwhelming impact they have when somebody speaks Urdu. So suddenly, if you start speaking Urdu in Delhi, you can draw a crowd around you because everybody thinks you're an intellectual. But if you did the same thing in Tamil, you think people will gather around you? You just have to read 2 bits of lines of poetry and turn around and look, and everybody thinks, oh, one more Javed Akhtar has been born. And you could say nothing, and yet people will say, wah wah. Have you ever heard some guy from Zambia giving a speech with some poetry in between? This is Urdu's role in destroying the emergence of India is considerable. And it was not an isolated event, that no Indian movie from the 50s, 60s, 70s, or 80s had a single word of Hindi in them. It had to be Urdu, and it had to be seen because there was nothing else there. So these tiny things that need to be confronted are around all of us, everywhere. I hope I have addressed some of the issues, but I'd be more than happy to answer questions. If I'm not being on track, trust me, it may be because my morning tea is not really settled in.
नहीं तारिक जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि you actually have got up so early in the morning and joined us today for this webinar. I think listening to you, I think a lot of us listening to you here across the world, and I hope the Indian diaspora in the US also understands how this takeover, the gradual takeover, has happened. How China has made its net so vast of this debt trap, and how it's made pawns of countries like Pakistan bow to whatever they say. You Tariq, should try. You should try going to Ethiopia to find out how, or Peru, where entire countries are indebted. Sri Lanka may very well be. Bangladesh is being pushed in that direction. Maldives is around you. Their goal is to surround India. They don't lie. They don't even lie. That is why the topic gets confused. Pakistanis lie. The Chinese don't have to lie. They simply, simply attacked India. It's not that they sneaked in or sent some mujahideen across the frontier. They sent their own army and killed some of our soldiers, and the world didn't notice it. It should have pictured somewhere in the debates that the Americans are having in these elections. The issue of India should come up. There has to be some sort of person who has some access somewhere in one of the camps, but there's nothing there. I mean, look at the people. Senator Sanders' campaign was run, managed by a Pakistani and chaired by a Khalistani. And that was the brightest man in America, who unfortunately they didn't allow to run because he's an honest man. You look at what's his name, Sleepy Joe, and he just gave a speech about why it was essential to have Islamic studies introduced into the American school curriculum. You think such an idiotic person could think of these things? No. He obviously has someone in his circle. There's a guy called Mitta who's managing his affairs, that he would read that speech confident that he could get the vote bank, and the rest of the people who understand what it means to say to introduce Islamic studies at school will be too silent to respond. Otherwise, do you think he could have said that if he knew that there are three times more Indians in United States than Pakistanis? But the Indians in the United States are too busy looking for fair and lovely girls as wives and asking their mothers to get them someone. They can't even. It's a pathetic scene. The women I see, the young female students from India who come to Toronto, I see them. I live in downtown. I see them working, confident, on bicycles. लड़के सारे डब्बू हैं. I'm serious. They are overweight. They are so busy doing what. अरे मैंने दो चार को बोला, अरे को साली गर्लफ्रेंड नहीं होती तुम्हारे साथ, कभी चार चार लड़के घूम रहे होते साथ. What sort of my business? But they are not involved in politics. I'll give you one example and then you can continue. I had worked with a member of parliament who was Canada's former ambassador in Kabul. So he understands the situation very well. And we were able to extract 4 Baloch whose lives were in danger and get them to Canada. One of the young men who got here, when he reached the airport, I asked him if he had wanted to call his parents. He looked at me and he said, अरे वाजा हमारे यहाँ तो बिजली भी नहीं है, तो फोन की क्या बात करते. He had smuggled himself out in an onion truck, 800 miles hidden inside it. He said for days he couldn't get rid of the onion smell on his body. He reached here. Today at 4 o'clock, you imagine that guy from the mountains of Balochistan is now in his second year in university. When he came here, he had not done the schooling.
He is not only in second year at University of Toronto, but today at 2 o'clock he's leading a demonstration in downtown Toronto against Pakistan. I can bet you 1,000% there will not be an Indian anywhere close by. जब वो लड़का कर सकता है फ्रॉम ट्राइबल टेरिटरीज डीप डाउन इन पॉवर्टी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग गया है, उसको मैंने दो चीजें एडवाइस दी थी। एक तो ये देसी चैनल जो होते हैं ना, ये मत देखना भाई, और दूसरा सिर्फ इंग्लिश रेडियो नेटवर्क सुनना ताकि तुम्हारा वेडनेसडे खत्म हो जाए, you know, all the tweaks and turns, you will start hearing the English that will get embedded. He's a fluent guy, or I'm really, although I'm a bit not well, I'm going there just to see his accomplishment. Every member of the Indian diaspora should be doing that. अरे हर घर से तो एक आदमी निकले ना, वो क्या है नारा पाकिस्तानियों का, घर घर से भुट्टो निकलेगा, वो एक निकल जाए एंड खड़े हो जाए सामने, जैसे ये खालिस्तानी जुलूस निकालते हैं. You can beat the hell out of this Pakistani mafia that is choking everyone. So I'll conclude with that, and you can then continue with some questions, or other people might want to say कि क्या बकवास बुड्ढा करके चला गया. तारिक जी, you have been amazing, seriously amazing. और कहीं ना कहीं आई थिंक ये क्वेश्चन हर एक इंडियन को अपने से पूछना चाहिए जो भारत में है और भारत के बाहर है, कि क्या हम लोग इतने कंफर्टेबल हो गए हैं या हम कन्फ्रंटेशन से इतना डरने लगे हैं कि हम सच के साथ नहीं खड़ा होना चाहते. हम लोगों के साथ ये हादसा 2019 में हुआ था जब IHC को अटैक किया गया. जी. जब IHC पे अटैक हुआ उसके बाद हम लोगों की आंखें खुली. नहीं तो क्या फर्क पड़ता था, क्या कोई बोल गया या क्या कोई कहेगा. तारिक जी, आंखें खोली हैं आपने, एंड आई होप एंड आई प्रे that all the Hindus and Indians watching us today, or who will be subsequently watching us via YouTube and Facebook, for them this is a wake-up call. अब कुछ questions और answers की तरफ बढ़ते हैं तारिक जी. प्लीज. और बहुत सारे आ रहे हैं. आप सब ने जो YouTube और Facebook के माध्यम से questions भेज रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. We'll try our best to take as many questions as we can. First question तारिक जी ये आ रहा है, what are the chances of Pakistan breaking up in the near future into Balochistan, Sindhu Desh, Punjab and NWFP? If that were to happen, would Afghanistan acquire the Northwestern Frontier province, or will the breakaway province have separate identity as Pakhtunistan? And how would Taliban be impacted under the above two scenarios? That is, either the NWFP becomes part of Afghanistan or becomes Pakhtunistan. तारिक जी जवाब दीजिए. जी जी, देखें, इसका एक सिंपल आंसर है कि अटक से कटक तक तो है हिंदुस्तान, नीचे उसके है बलूचिस्तान और उस पार अफगानिस्तान. अगर ये भी समझ में नहीं आता, ये मैं लॉ ऑफ नेचर की बात कर रहा हूँ. फिजिक्स की लॉज डू अप्लाई ऑन जियोपॉलिटिक्स एज वेल. ऑल मैप्स चेंज एवरी 50 years. Because our adult lifespans are limited to about 40 years of normal thinking, we never notice it. But मैं आपको बता दूं कि गोवा का अंदर आना या पाकिस्तान का बनना या बांग्लादेश बनना और भूटान, सिक्किम की सारा आप करें, आप देखिए इंडिया का नक्शा 1947 के बाद कितनी दफा बदला सब कॉन्टिनेंट. नाउ पाकिस्तान is not a state, it is an abbreviation, it is a क्या कहते हैं, acronym. There never was a Pakistan and there never will be a Pakistan. It's not because that territory will disappear and there will be sea over there. The reason being that it was created solely for the purpose of creating a buffer state between a pro-Soviet
Afghanistan King Zahir Shah, and the Congress CPI links in India, which were a threat to then, at that time, Britain, who was a senior partner, now it's the Americans, and the, the Indians the Brits asked the Indians at that time, 45 के बाद जब war खत्म हुई, कि what will be the stake of Britain having bases in northwest India. ये सवाल पूछा गया. नॉर्थ वेस्ट इंडिया मीन्स ये जो एरिया हमारा गिलगित बिल्तिस्तान और पेशावर का और ये एरिया. एंड दिस क्वेश्चन वाज पुट टू अपने क्या नाम था, बड़े लेफ्ट विंग थे कांग्रेस में, कृष्ण, एनीवे यूएन में भी बहुत बड़े स्पोक्सपर्सन थे, इट स्लिप्स माय माइंड. कृष्णमाचारी. जी जी. एनीवे उन्होंने नो कहा, और नेहरू जी ने भी, और ये आपके जो मौलाना आजाद थे, नो नो नो. अंग्रेज को चाहिए था फौजी बेसिस वहां, क्योंकि रेड आर्मी ने महाबाद एक कर्द स्टेट बना दी थी, ईरान के अंदर अजेरी रिपब्लिक बना दिया था, एक पीपल्स रिपब्लिक. और इनकी हवा गुम थी कि ये जो एरिया बलूचिस्तान का है, यहाँ तो मीर बजिंजो और ये सब लोग थे भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स, तो ये होगा क्या. जब आपके कृष्ण मेनन ने नो कहा, तो चर्चिल साहब गए अपने जिना साहब के पास, जिनके 26 अपार्टमेंट थे, वो प्रॉपर्टी मैनेजर थे. जिना वो नामाकूल आदमी है जिसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिडंट नोटिस कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई. He never wrote about the disappearance of the Turkish Caliphate. He didn't know anything about the Bolshevik Revolution of 1917. He had nothing, no idea of the Spanish flu that killed 18 million Indians. उसका सियासत से ताल्लुक नहीं था, उसका जिना का था पैसे से. उसने मैट्रिक करने के बाद कभी कोई कॉलेज नहीं अटेंड किया. तो दिस इज द मैन दैट द ब्रिटिश सेड, तेरे सूट और इंग्लिश बड़ी अच्छी, तू पाकिस्तान बना और स्टॉप the red influence coming into India, because whether you like it or not, the CPI, which is now CPI and CPM, had a very big role in the independence movement. And the left wing, whether we talk about Bhagat Singh or the revolutionaries from California, जो जिनको गदराइट कहते थे, इन सबका बहुत बड़ा रोल था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में. And the West was scared. So they created Pakistan through Jinnah as a buffer zone, जिसके अंदर they set up the military bases. And if you, some of you are old enough to remember, the U-2 that of Gary Powers that flew and was shot down over the USSR flew from an air base at Biar Bait in the northwest. जिस पे Khrushchev ने कहा था, I will make Peshawar disappear from the face of this earth. That all took place from prospectively. अंग्रेज ने जो कहा था कि पूरा इंडिया यूनाइटेड हो और हमको बेस नॉर्थ वेस्ट में दो. Things, however they turned out, the Americans took over Pakistan into what was then called CETO and CENTO, which is the equivalent of what is today NATO. Southeast Treaty Organization, Southeast Asian Treaty Organization, and Central Treaty Organization. CENTO में ईरान, इराक और पाकिस्तान थे, और सीटो में पाकिस्तान इन द वेस्ट, ये जो आज बांग्लादेश है, आपका फिलीपींस, थाईलैंड, they were involved in CETO. And their target was neutralizing India as a non-aligned or in some ways pro-Russian, pro-Soviet friend. So these things were planned, done with the objective that does not remain anymore. The Soviet Union doesn't exist.
Islam can be better sold and marketed by the Afghans. The Turks are out there doing their bidding for their imperial glory, and they consider, as you can see today, the war between Armenia and Turkey. Their goals are the same as the goals of Timur. और बात है कि आपके यहाँ आज भी बच्चों के नाम तैमूर रखते हैं, but people in India, the Indian Muslim doesn't realize that when he keeps his names on the basis of those who invaded India, he's not part of India. वो बोलता रहे जितना भी, because every Indian Muslim, Pakistani को तो छोड़ दें, since 1947 has not named the child, given the child an Indian name. True. ये सोचने वाली बात है. There is not one child जिसका नाम हो सूरज या चांद. उसके अरबिक वर्जन शम्सुद्दीन आपको हजारों मिलेंगे. They will rather call him Shams than Suraj. They will call him आफ्ताब, not चांद. और महताब होता है या आफ्ताब पता नहीं क्या है. आप देखिए कि जफर है, तो nobody has a name called विजय. अब विजय रखना नाम और जफर रखने में आपको जफर क्यों रखना है? आप बच्चे का नाम रख दी ना विजय, कोई इसमें वो हिंदू तो नहीं हो जाएगा, वो हिंदुस्तानी होगा, लेकिन नाम हमेशा हिंदुस्तान के मुसलमानों का होता है अरबी, तुर्की या फारसी. बल्कि फारसी आजकल नहीं चल रहा है, ज़्यादा डिमांड में नहीं है, तो वही होते हैं. अब्दुल रहमान, अब्दुल कुद्दूस, ये सब क्या बात कर दो, कितनों के स्लीव रहोगे तुम लोग. ये अब्दुल नाम इज एन इंसल्ट. तुम तो यू नो, इनफैक्ट इन द मिडिल ईस्ट इट इज अ स्लर. यल्ला अब्दुल. अब्दुल का मतलब ही नौकर. कालों को वो अब्दी कहते हैं थ्रू आउट मिडिल ईस्ट, विच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अब्दुल. तो अपनी डिग्निटी जब नहीं होगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, और ये सिर्फ इंडियन मुसलमानों का नहीं है, इंडियन हिंदुओं का तो इंतहा हो गई कि वो जो कास्ट सिस्टम साला किसी तरह जा ही नहीं रहा. कोई शादी नहीं कर रहा, अरेंज मैरिजेस कर रहे हैं. Honey, this is phenomenal. People are getting married based on tracing of that heritage and caste. Then you saying you're not Indian. Either you are or you're not. If you believe that you are part of this subcaste, of that caste, of that tribe, then you're not an Indian, because you are declaring yourself as unworthy of a nation state. Can you imagine a German discussing with another German, hey buddy, I'm from the Hamburg caste. No, Berlin caste is very good. You go for a blood transfer, you check kiska blood aa raha hai. So Hindus need to wake up and stop this notion ke छोटी सी मरूटी के अंदर सेठ पीछे बैठता, because ड्राइवर के साथ कौन बैठेगा? Have you guys noticed this? जो बेस्ट सीट है उसको खाली छोड़ के पीछे बैठते हैं, वह जहां क्रैम फीट होते हैं, ड्राइवर अपना लग्जरी में आगे बैठता है. कभी आपको सीट सामने नहीं मिलेगा, सीट पीछे ही बैठेगा कुक्कड़ बन के. I mean, this astonishes me. Here in Canada, the United States, you're willing to sit anywhere, but India के अंदर ना, यहाँ तुर्रम खान. So that it is, India's problems are interwoven because and deeply entrenched is the word, because you try to convey to the world that Pakistan is not the Islamic country, India represents the Muslims of India. ये 47, 48, 49 नेहरू जी ने भी किया, मौलाना आज़ाद ने तो बिल्कुल ही हिस्ट्री बदल दी पूरी इंडिया की, और सब खुश हैं और बैठे हुए हैं आराम से. What you need to do, that the Indian Muslim needs to take ownership of India, वरना पाकिस्तान चले जाएं, और पाकिस्तान से तंग आए में तो बांग्लादेश चले जाएं. ऐसा भी नहीं है, और बांग्लादेश तो 10% साल का ग्रो कर रहा है. पाकिस्तानियों को तो ये भी चिढ़ चढ़ती है ना, कि जिसको भूखा बंगाली कहते थे, वो पूरे साउथ एशिया में इकोनॉमी सबसे ज्यादा उनकी चल रही है.
दे आर कलर कास्ट। गोरा जो है ऊपर का बैठे सकेगा और ये काला सारा छोटा सा बंगाली मार मार के जूते ठीक कर दिए सबको। एंड नाउ दे कैनॉट अंडरस्टैंड कि हाउ अ वुमन इज लीडिंग Bangladesh into prosperity. So Indian Hindus also have to recognize that if they are not Indian first, what is this caste about? टैम बैम है। मुझे किसी ने बोला मैं टैम बैम हूँ। आई डिड आई टू लुक बैक। उन्होंने कहा ये ए ग्रेड का ब्राह्मण है सर, ये F-16 है ब्राह्मणों में, ये तमिल ब्राह्मण। आई कुड फिगर आउट। फिर उसको एंग्लिसाइज करके टैम बैम बना नाम बना दिया है, और यहाँ अमेरिका में बैठ के। तो जीत तो चाहता है कि मुंह पकड़ के एक थप्पड़ बोले कैसा लगा, कैसा लगा, फिर एक मारो उठा के। I if it is a joke I can understand, but the guy seriously believes he's A grade हिंदू, पता नहीं नीचे से। और ये भी नहीं कि उसको पता हो कि चोला डायनेस्टी क्या थी, या वो साउथ से मुझे बता सके कि कैम्बोडिया तक कैसे गए राम की बात, कुछ उसको तो उसको सिर्फ ये पता है कि ही इज द F-16 ऑफ इंडियन ब्राह्मण्स। Zero knowledge of anyone telling me how do you have Buddhism in Vietnam? अरे यहाँ अपना आदमी है ना बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। It is like Ashoka being an Indian, or these are the people who were born and are gift to the world. Thank God Japan recognizes that, and to quite a degree it is a reservoir of all in Indian Buddhist sculptures और फास्टिंग बुद्धा जो लाहौर म्यूजियम में था वो भी अब जापान चला गया। लेकिन जब बमियान स्टैचूज गिराए गए तो इंडिया के इंडियंस को नहीं कोई गुस्सा आना चाहिए था? आप नोटिस करें, देयर वाज नथिंग दैट हैपेंड। नहीं, सैड। वेल, बुद्धा, you destroyed an ancient Buddha statue जो महमूद गजनवी ने नहीं हाथ लगाया, जिसको उसको तालिबान ने तोड़ दिया। तालिबान क्या है? तालिबान इज पाकिस्तान आया था। There is no such thing as तालिबान। ये बकवास की बात। आपने तनख्वाहें सबकी रखी हुई हैं एंड वी आर फूलिंग। अभी फिर उन्होंने बेवकूफ बना दिए विद दिस दोहा टॉक्स। कंप्लीट फ्रॉड चल रहा। दोनों साइड पे एक ही लोग बैठे हुए, अमेरिका से पैसे ले। मेरे जैसे को टेबल पे बिठा पूछता भैया पहले बमियान स्टैचू का तो हिसाब कर भाई, तू माफी तो मांग पहले। ये तो कर सकता है कोई डिमांड ना कि भाई एक्सप्रेस योर रिग्रेट एट हैविंग डिस्ट्रॉयड आवर सिविलाइजेशन। They were not harming you. They were just carved into a mountain. Nobody ever touched them, and you blew them up with gunpowder. ये कैसी बहादुरी? आज तक कभी आपने सुना है कि किसी ने उनसे कहा हो? जापानीज जाके कर रहे हैं, सब मरम्मत करते, ठीक करते, चुपके से वापस आ जाते। तो बुद्धा तो हमारा है, राम हमारा है, तो बुद्धा भी हमारा है, ये गुरु नानक भी हमारा है। जितने लोग हैं ये तो हिंदुस्तानी है ना। सावरकर भी है और ना भगत सिंह भी है। हर टाइप का हम तो सब्जी बनाते हैं ना। सिर्फ ये थोड़ी कि बिकॉज ये वेजिटेरियन हम सिर्फ करेला खाएंगे। भाई कभी साग खा लेते हैं, कभी तो ऐसे बनाने वाले नहीं, हम बस एक ही चीज करेंगे। तारिक जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्लीज, मैं आप मुझे टोक के मेरे जवाब कम कर दिया करें। नहीं, इतना अच्छा लग रहा है ना आपसे बात कर, आपकी बातें सुन के। कहीं ना कहीं शायद ये एक चीज में जागृत भी कर रहे हैं हम लोगों को कि कुछ तो शर्म करो, ये हो रहा है अपने आसपास, अपने ही बुद्धिज्म। अभी देखिए अफगानिस्तान में सिख गुरुद्वारे के साथ क्या हुआ, लोगों को वहां पे मारा गया। तो इतनी सारी दुखद चीजें और हम देखेंगे कि हम लोग, मतलब अब तो कहते ना कि आपके डोर स्टॉप, कहते ना कि आपके बिल्कुल दरवाजे पे आ गई ये चीजें। अब तो जागो, दैट इज द स्टेटमेंट आई थिंक यू वांट टू मेक। बट व्हाट वरीज अस विद ऑल दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग,
चाइना में जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे हांगकांग को लेके इतना हल्ला हो रहा है हर जगह, तिब्बत को लेके बीच में रिचर्ड गेयर और ये सब काफी लोग बातें कर रहे थे। Will Tibet and like even for the Uyghurs, Tariq ji, even Imran Khan doesn't even acknowledge, कि Uyghurs का एक सिचुएशन है जो चाइना में इतना उनका अब्यूज हो रहा है, वो लोग को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं करने दे रहे हैं। वो तो ये अपनी तिब्बत बेटियों और Uyghurs के साथ मिल के कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा where China will actually also disintegrate. Do you see that देखिए happening? देखिए इमरान खान तो अपनी अपनी बेटियों को रिकग्नाइज नहीं करता, तो उइगर्स को रिकग्नाइज करेगा? कई मुल्कों में फैले हुए उसके बच्चे, बीवियां उसकी जो हैं पहले जिससे इश्क करते थे उसकी बेटी से शादी कर ली। मतलब एक बिल्कुल ही घटिया किस्म का आदमी, एब्सोल्यूट ब्रेनलेस, इन द डिम इसको कहते थे, यानी है ही नहीं कुछ उसमें। वो समझ रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। इतना बेवकूफ आदमी कहाँ मिलेगा। अब जहां तक चीन का ताल्लुक है, देखिए चीन जो है वो डिसइंटीग्रेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि चीन पिछले कोई 34,000 साल से चीन है, राइट। पाकिस्तान हैज नेवर बीन पाकिस्तान। ये दो यू मिक्सिंग अप carrots with onions or whatever the expression is. China is one of the ancient civilizations that is being threatened by the democracy of India. चाइना के अंदर जो मेन लैंग्वेज है, मेन डोमिनेशन हैंड कम्युनिटी जो है उनका चलता है। इंडिया के अंदर 29 तो स्टेट्स हैं, तो 400 तो जबान है, 6 धर्म चल रहे हैं साथ में साथ कंपटीशन में एक दूसरे के। कोई जैन है, कोई सिख है, मुसलमान है, पता नहीं कितने लोगों के, और हिंदू हर टाइप का है। हिंदुइज्म इज नॉट सम ऐसा कि कोई पोप हो ऊपर और वो गाइड करे, ये तो सेल्फ ड्रिवन है ना। आपकी जैसे मन में आए आप अपना फाइंड योर पाथ टू पीस। चाइना विल not disintegrate, Pakistan will disappear. But the real threat is that China, by building the CPEC route, is going to colonize Balochistan. And this is a total looting of a land जहाँ के पहाड़ सोने के हैं। $6 बिलियन तो अभी वो कनेडियन कंपनी को पाकिस्तान ने देने हैं, जिनके चिलियन और कनेडियन कंपनी का जॉइंट वेंचर था, एंड विच द पाकिस्तान मिलिट्री जस्ट टुक ओवर। उनको निकाल दिया वहां से। $6 बिलियन को उनको कॉम्पनसेशन देनी है, वो चीन दे देगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि कम से कम 50,000 बच्चे गायब हैं, किसी को नहीं पता वो कहाँ डिसअपियर करते हैं। उइगर का सिस्टम तो ये को उनको तो कैंप में डाला हुआ है ना, उनको तो मार्च करा रहे हैं, मौलवियों को डांस करा रहे हैं। कुछ तो अच्छा भी लगता है मुझे कि शायद शक्लें ठीक हो जाएंगी इनकी, ये कैंपों से निकलने के बाद के ढंग के तो लगेंगे, ये अब्बा जी का पजामा और कुर्ता नहीं पहन के सड़कों पे आएंगे। बट नोटिस ये करिए कि आपके इंडिया में कोई मुसलमान क्यों नहीं चाइना के बाहर प्रोटेस्ट करता? हैव यू एवर सीन कि वो दिल्ली जामे मस्जिद का इमाम खड़ा हुआ हो वहाँ बुखारी साहब कि ये बंद करो ना? उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आज तक किसी यूपी सीपी के या बिहार के मुसलमान ने जाके कश्मीर के जो हर वक्त चिक चिक करते रहते वहां नहीं गए कभी। ये तो इनका उर्दू है, अरबी के बाद उर्दू और फिर इस्लाम खत्म। तो ये अपने जो थे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, ये तो उर्दू नहीं ठीक जानते थे, तो ये कैसे हो गए मुसलमान? दिस इज अ वेरी रेसिस्ट, bigoted attitude of northern Indian Urdu speaking Muslims towards other Muslims. आप सोचिए कि सब के सब ट्रेनों में भर के पाकिस्तान आए। मैं आपको एक डाइवर्सिंग बट एक मैंने अपनी पिछले 50 साल में जो ऑब्जर्व किया मैं आपको बताऊं। आई हैव नेवर मेट समवन whose grandparents came from Punjab and went to India and who are not full of sorrow.
जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ वो ले जाते हैं, मेरी दादी से मिलिए, वो रावलपिंडी से थी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. I've been to homes where old 80-90-year-old people have, मुझे देखते ही ना उनकी आंखों में आंसू आ जाते. मुझे आज तक एक इंडिया का मुसलमान नहीं मिला है जिसकी फैमिली पाकिस्तान आई हो और जिसको जर्रा भर मेमोरी हो या याददाश्त हो या दुख हो. मेरे सारे दोस्त जो हैं, my closest friends, are all children of immigrants who came from UP and Bihar. In 70 years of my life, I have never heard one of them or their parents say, "Oh, I miss my home." They came as triumphant owners of a territory that they will rule. And they banned all the languages of Pakistan and imposed Urdu, which made them superior because all government jobs required Urdu as a compulsory language. Automatically, 60% of the country that was East Pakistan or Bangladesh could not get jobs. Sindhi was banned in Pakistan. Andaza lagaiye. One of the languages that gives birth to so many languages. पंजाबी की ये हालत थी कि पंजाबीज themselves banned their language. Even today, it's not somebody else who says Punjabi is not to be taught. The Punjabis themselves are ashamed of their mother tongue. Baloch ko to jaane de. Pashto, the Pashtuns always, well, Pashtun was Dr. Khan Sahab and गफार खान की एरिया थी, वो तो खुदाई खिदमतगार, उनका कल्चर ही अलग था. So we are in a situation where two different types of people emerged. All Hindus and Sikhs from Pakistan live a life of sorrow. All Muslims of UP, Bihar live a life of empowerment. जैसे उन्होंने जाके सिंध पे कब्जा कर लिया. जो अब भी आपके बांग्लादेश में मीरपुर का जो मोहल्ला है जहाँ को 1-2 मिलियन बिहारी मुसलमान रहते हैं, they still carry the Pakistan flag over there with Ziaul Haq's pictures. I've been there. तो इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है. आई हैव मेट वेरी फ्यू पीपल who have a grasp of what the hell is going on in Bangladesh and in Pakistan. कोई है ही नहीं यूनिवर्सिटी में स्टडीज फॉर ऑन पाकिस्तान और बांग्लादेश. यू नो, कहीं तो होना चाहिए ना कि अंदर क्या हो रहा. पाकिस्तानियों को ना पता हो इंडिया में क्या हो रहा है, डजंट मैटर. इंडियंस को ना पता हो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? आपके तो नेशनल एंथम में है ना सिंध. पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ उत्कल. हाँ, वो तो खत्म हो गया. तो आपको पता ही नहीं कि सिंध कोई जगह है. लोग समझते हैं सिंधी लोग होते हैं, सिंध नहीं कोई जगह, और सिंधी सब पैसे वाले होते हैं. ये स्टीरियोटाइप बना हुआ ना इंडिया में. बड़े जबरदस्त ट्रेडर होते हैं सर सिंधी. अरे भाई सिंध कहाँ है वो नहीं पता सर. बॉम्बे में रहते हैं लोग कुछ सिंधी. They can't look at a map and identify सिंध. उनको पूरे हिंदुस्तान में राजा दाहिर का नाम किसी को नहीं पता. आपके सीएम जो हैं यूपी के, उनसे मैंने कहा एक सड़क का नाम तो रख दें सर राजा दाहिर के नाम. He was like taken aback because he didn't know. Nobody knows who is Raja Dahier. The man who first died fighting the invasion of India by the Arabs. अच्छा वो हार गए ना, ठीक है, अपना धंधा यहाँ कर लेंगे. इस दरिया के इस तरफ चले गए सारे. मैंने कहा ठीक है, पिटने दो. मुल्तान गया, अच्छा ठीक है, मुल्तान से भी. लाहौर गया, उसने कहा ठीक है, राम के बेटे को शहर था, बट व्हाट डू वी नो, प्याज कहाँ सस्ता मिलता. यू कैन नॉट हैव अ कंट्री where there is no motivating factor other than personal benefit. And that unfortunately is the Indian middle class. आपके फौज में भी आप कोई एक फौजी बताइए सोल्जर जो मिडिल क्लास से. नहीं, वो तो सर ऑफिसर बनेगा ना. सोल्जर तो ये गुरखा बनेगा, बिहारी बनेगा, कहीं इधर उधर से ले आएंगे हम सर.
कि नो 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 नो, पप्पू कोई नहीं बनेगा फौजी। कैन यू इमेजिन, इसराइल में कोई बोले कि शेरॉन ऊपर से आया था? हर कोई आर्मी चीफ पहले सोल्जर होता है। ये इंडिया ही है, टॉप आदमी सोल्जर नहीं होता है, ऑफिसर बनता है, वो पैदा ही ऑफिसर होता है। आप कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग अगर करेंगे पूरी कंट्री में कि हर इंडियन 6 महीने फौज में काम करेगा, तो समझ में आएगा ना कि चारपाई पे कैसे सोते हैं। सुबह अम्मा नाश्ता नहीं बना के देंगी कि जाओ पप्पू गोरे होके आओ, यूनिवर्सिटी जा रहे। नहीं तारिक जी, कितने दुख की बात है ना कि हम लोगों को, जब हम लोग वी वर ग्रोइंग अप, हम लोगों को शायद टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाया गया, औरंगज़ेब, अकबर द ग्रेट सब पढ़ाया गया। पर जो सच्ची में पढ़ाया जाना चाहिए था, वो जानबूझ के छोड़ा गया। हाँ, वो अबुल कलाम आजाद को दुआ देना, मक्का में पैदा हुए थे, मदरसे के पढ़े हुए, जिना साहब से ज्यादा डेंजरस थे वो, क्योंकि जिना साहब थे इडियट, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। अबुल कलाम आजाद ने आपको आई डोंट नो वेदर करकोटा डायनेस्टी के बारे में कोई पढ़ाता हो इंडिया में, कहीं नेवर। क्यों? कि करकोटा डायनेस्टी 8th सेंचुरी की है, तो आप अगर वो पढ़ाएंगे, जो द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया दैट स्प्रेड फ्रॉम कश्मीर टू बांग्लादेश एंड द कॉकेसस, उन्होंने कहा इसको तो निकालो। क्यों? कि अगर वो पढ़ाया तो फिर बताना पड़ेगा कि सिंध में क्या हुआ। जी। तो 8th सेंचुरी इंडिया को पूरा हटा दिया। आप कहीं कोई किताब 8th सेंचुरी इंडिया आपको नहीं मिलेगी पूरी इंडिया में। बहुत कन्वीनिएंट था शायद तारिक जी, हम लोगों को वो पहलू ही नहीं दिखाना, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, जो हम नहीं, लोगों की देखिए, आप वो आपका आइडेंटिटी। कसूर नहीं है। आप पे 1000 साल आप पे किसी फॉरेनर ने हुकूमत की है, जी, और जिन्होंने सबसे ज्यादा किया उसको आपको कन्विंस कर दिया कि ये तो फॉरेनर है ही नहीं, ये तो मुगले आजम है। तो धड़ाधड़ फिल्में बन रही हैं मुगले आजम की। नाच रहे हैं लोग लखनऊ में। या ऐसे पाकिस्तानी में ऐसे कहते हैं, पागल हो गए सब ये। दे आर एक्सटोलिंग द वर्च्यूज ऑफ द पीपल हु इन्वेडेड देम। लाइक, ट्रू, हाउ डम कैन यू बी? ट्रू। तारिक जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैं हाँ आपसे लेना प्लीज। चाहूँगी। अ, एक क्वेश्चन ये है, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस क्वेश्चन अक्रॉस। व्हाट इज़ द टेम्पलेट टू लिव विद अ रैडिकल नेक्स्ट डोर? The world needs this template. How can the Pandits go back to their original properties in Kashmir? देखें, I'll first answer the second question. The pundits have no desire to get back the property. I've seen they are the wealthiest in the United States. It's the wealthiest Indian community in the diaspora, and I have a lot of friends in the Pandit community. They became refugees in their own country. And so they realized, I think deep in their hearts, that India is not going to protect its own people from its own enemies. Nobody in India rose up कि क्या हो रहा 1990 में, जब उनका कत्लेआम हुआ, जी, उनका जेनोसाइड हुआ। Nobody in there is no trace of people standing up. जम्मू के अंदर भी जहां उनको रेफ्यूजी कैंप्स में रखा, इधर उधर टेंशन्स हो गई थी, सबके सब गए हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल नाउ, but those wounds are there. And I have good friends who are from the Pandit community. They can't be divorced from what is the rest of India. The notion that I will fight and sacrifice for truth is not a slogan, motto banaya hua aapne. You have to show some resolve in it. गांधी जी का मजाक उड़ा उड़ा के तो it's the only country that insults Mahatma Gandhi is India. आपने सोचा ये कभी कि the one person that is respected universally as a symbol of greatness is laughed at by all middle class Indians?
वो चाहते हैं कि जिन्ना साहब की तरह गांधी जी भी सूट पहनते तो हमारी वाह वाह होती। Oh, yeah, true. उन्होंने क्या धोती पहन के आगे बेशरम साले को वीजा नहीं मिला कहीं का। हमारी तरह देखो कैसा सूट पहना हमने नया नया। Identity makes a difference, right? एंड क्या इंफीरियोरिटी, पहनते हैं, आप कैसे बोलते हैं, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। जी, बिल्कुल। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द प्रेजेंट सिनेरियो, तारिक जी। अरे वो रह गया आपका जवाब, हाँ, नेक्स्ट डोर नेबर का। जी, जी, बताइए। हाँ, नेक्स्ट डोर नेबर का तो आप ऐसा करें कि आपके नसीब में तो आ गया, आ नहीं सकता, नेक्स्ट डोर नेबर आपके पास आएगा नहीं। आपका नेक्स्ट डोर नेबर कोई अगर बता दे मुझे कि कोई ईरानी या अफगानी या पाकिस्तानी ने आके कहो, अरे मैं ये लिटिल इंडिया है टोरंटो में, मैं जरा इंडियंस के साथ रहना चाहता हूँ, आपके इंडियन मुसलमान नहीं आपके साथ रहना चाहते, तो वो कौन सा आएगा वहां रहने को? शायद कोई गोरा, यू नो द नेबर्स राइट अक्रॉस माय स्ट्रीट, he's Eugene is 85 and his wife, they are Bollywood Hollywood film producers. They are both Hindus and they are both white Canadians. तो मेरे तो घर के सामने आश्रम बना हुआ है, घर पे मैं हॉस्पिटल में था तो यहाँ दिए जलते थे। अब उनसे कोई पूछे कि भाई तू क्यों हिंदू हुआ, हाँ, महर्षि के साथ आए थे वहां 1969 में श्रीनगर। तो आई एम फॉर्चुनेट कि आई आई लिव इन द कंपनी, आई डिडंट चूज। वो बात करते हैं, लेकिन another neighbor next to me who's a Pakistani woman married to a white man, they will not even make eye contact with me. ओके। So there is a built-in contempt for the truth and for the other that has to be challenged. आई कैन इमेजिन तारिक जी, अब पता नहीं आप कैसे सबके साथ फिट अरे बैठो। हमारे यहाँ आके देखिए, टोरंटो बड़ी मजेदार जगह है, आएँगे, जहाँ पक्का लोग जीतने के आएँगे। बाद भी कहते हैं आई एम सॉरी। वो न्यूयॉर्क का टेनिस आप चैंपियनशिप के बाद कैनेडियन जीती, तो उसने जो नंबर 2 है उसको कहा आई एम सो सॉरी यू लॉस्ट। अमेरिकन होता है तो वो फेंकता हवा में और ये करता, ये कैनेडियन थी, इसने कहा जाके आई एम सो सॉरी कि मैंने तुमको हरा दिया। तो ये बड़ा नेक लोग हैं, सीधे लोग हैं। इनका, इनकी जो रिलीजियस कम्युनिटीज थी, दे वर वेरी लेफ्ट ऑफ सेंटर। दिस इज वेरी टॉमी डगलस जो थे, जिन्होंने हेल्थ केयर इंट्रोड्यूस किया यहाँ। जब तक आपके यहाँ लेफ्ट नहीं होगा, आप में अकल और शऊर नहीं आ सकता। और इंडिया के इंटेलेक्चुअल ने तय किया है कि ये तो कम्युनिस्ट पार्टी इज बुलशिट, और ये वो, उनको बेचारों को पता ही नहीं कि भगत सिंह कौन। और अगर कभी एनालाइज करना पड़ जाए नेताजी का, तो इट्स दी ओनली कंट्री ऑन अर्थ जहां हिटलर और इजराइल दोनों को एडमायर करते हैं। जी। हैव यू थॉट ऑफ हाउ स्क्रूड अप इट वुड बी? आप छोड़ दें किसी, आप एक न्यूट्रल पैनल के पास जाइए, दिस इज अ मैन हु एडमायर्स हिटलर एंड इजराइल, वो तो साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देगा ना। दिस हैज टू बी समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद समवन। और इंडिया में आपको हिटलर की किताबें भी बिक्री होती हैं, nowhere else in the world। कुछ 30-40 मुल्कों में तो मैं घुमा रहा हूं, only in Delhi you can see Hitler's books being sold, और लोग माइन कैम्प लेके जा रहे हैं घर पे, और वही लोग बिल्कुल प्रो इजराइल हैं। दैट्स शॉकिंग एक्चुअली। आई थिंक बहुत हम लोग, काफ़ी लोग दिल्ली से हैं यहाँ पे, जिन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं था, किसी बट होटल में जाइए, आपको हिटलर की किताब मिलेगी बुक शेल्फ में, बड़े प्यार से सजा के रखते हैं। जी, चलिए। ये अब तारिक जी, ये तो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ये है, इज़ गज़वा ए हिंद रियलिटी? व्हाट प्रिकॉशंस हिंदूज़ नीड टू टेक अगेंस्ट सच अ थियरी? आपके देयर आर अबाउट 10,000 mosques and 50,000 madrasas in India, and each one of them prays every Friday कि या अल्लाह, मुझे कौमुल मुसलमान को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब कर। वो मेरी बात नहीं कर रहे हैं, फतह तारिक फतह नसीब कर, वो कह रहे हैं दे वांट
victory over the non-believing Hindus. And this is being prayed in every mosque of India for the last 70 years. आपके तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजान पे पाबंदी लगाई ना, लाउड स्पीकर पे जी। हाँ, ये कनाडा में आ गई है अजान। अल्लाह अकबर है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, ये तो हमारा वॉर क्राई है ना, तकबीर, नारा तकबीर होता था अल्लाह अकबर। अब अरबों की वजह से वो शॉर्टन हो गया है, अब नारा तकबीर नहीं कहते हैं, सिर्फ तकबीर कहते हैं पाकिस्तानी और इंडियन मुसलमान। तो आपने अपने अंदर वो जरासीम पैदा कर लिए कि हर रिलीजियस अथॉरिटी इन इंडिया, everyone will refuse to denounce Ghazwa Hind as a doctrine. It's not whether it is true or not. It is not कि वो फैलाता है या नहीं फैलाता. The test is, are you willing to denounce it? And nobody will. And Ghazwa Hind का आपको पता है ना कि क्या है आइडिया? अच्छा, हिंदुओं को ये शायद पता नहीं है कि हमारा गोल है टू डाई, कि दुनिया एक ट्रांजिट लाउंज है और यहाँ से फाइनल जर्नी हम फ्लाइट जब आएगी तो वी विल गो टू पैराडाइज। वो फ्लाइट उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हिंदुस्तान में एक भी हिंदू जिंदा है। जब तक सारे हिंदू टेम्पल डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, जब तक रोजे कयामत नहीं आएगी। कयामत is not hell, कयामत is day of reckoning, which means that's the day that we will be liberated from the prison sentence on earth and live as free people with hundreds of hookers all around us, and वो कहते हैं शहद की नदियां। Can you imagine jumping into a lake, in a stream full of honey? मैं तो the whole idea is creepy, you know, it will all stick on your body, but they believe in it, and they are detailed books on the brothel-like climate that is awaiting them. And this is being taught as a religious doctrine. And it's not in the Quran. ये तो फ्रस्ट्रेटेड लोगों ने बनाई है, जिनकी 200 बीवियां थीं और 300 लौंडियां थीं नवाब वजाहत अली खान की तरह. Whether they were, and mostly these were the Umayyads, who were the enemies of Muhammad, who created the Umayyad dynasty. So India में there are very few Hindu scholars who understand this. There are millions of Muslims who know this but will lie to you. There are very dignified Indian Muslims like Atah Hasnain हैं, general हैं, और काफी लोग हैं, बच्चियां हैं, I know, who are very straightforward but who will be destroyed in एक तो आपको याद होगा थप्पड़ मारा था एक मौलवी साहब को लाइव टीवी पे ऐसी औरतें, he was in jail for quite some time. इतनी बहादुरी कोई आम आदमी दिखा दे कि कन्फ्रंट करे कि ये क्या है विदाउट एंगर। गलती कहाँ होती है? when we fight hate with hate. You have to fight hate with truth, and when you're speaking the truth you don't have to get angry. वो लोग नहीं मिल रहे जो डेडिकेट करें अपने आप को हिंदुस्तान की सर्विस में और ये कहें कि हिंदू और मुसलमान की शादी हुई भी जिसमें तलाक नहीं हो सकती. Now what? Now you will be, the spouse that is crazy will be sent to a doctor, psychiatrist, to say कि ये पागल है मेरा खसम या मेरी बीवी, इसको ठीक करें आप. वो भी नहीं हो रहा. जो कन्फ्रंट करते हैं वो हेट्रेड से करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं मोहम्मद वाज अ रेपिस्ट एंड दिस वाज दैट. आप you know the ultra right how it behaves. So we are not looking at solutions, we are looking at how we can be satisfied by
feeding our own ego. मैं नहीं किया जी, देखो मैं नहीं किया जी, आधा इंडिया तो इसी ईगो में मर गया जी 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 बिल्कुल। कि man, you know, I am telling the big time truth. Shut up. If you're telling the truth, just shut up and say it again. Truth always rises. ये तो इंडिया का मोटो है और कोई समझता नहीं है। आज बहुत इंडियंस आपको सुन रहे हैं। अच्छा वाकई That is so true. और शायद बहुत सारी चीजें आज हम लोग अपने आप से शायद क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ गलतियां हुई और ये गलतियां अभी गलतियां भी नहीं सुधारी जा होगी, सकती है। इसको गलती मत समझें। आपकी इनोसेंस जो है आपको मार जी रही है। यू डू नॉट नो कि आप फौजी हैं, आपके फ्लैंक से कौन अटैक कर रहा है। true. गुरिल्ला वॉर में जो हमारे बलोच दोस्त लड़ते हैं, वो पहाड़ियों पे से एक गोली चलाते हैं और फिर पहाड़ के टॉप पे जाके सो जाते हैं एक दिन के लिए। नीचे फिर को 500 फौजी ढूंढता रहता है वो आदमी कहाँ है। वो हमारा जो वाजा है वो ऊपर बैठ के सो रहा होता है। यू नीड टू बी स्मार्ट, इंटेलिजेंट टू फाइट समवन हु इज मोर पावरफुल देन यू। एंड इन टुडेज क्लाइमेट द जिहादी इज मोर पावरफुल देन एनी इंडियन, because the jihadi wants to die and the Indian Hindu wants to live. In a war between those who wish death and those who wish life, the one who wishes death will win. Whether he blows up Rajiv Gandhi, जो suicide bombing हुई थी, or whether he destroys completely a country like Afghanistan, it's always those who wish death, and this has been inculcated in our minds that life on earth is temporary. Permanent life comes after death. You cannot have a girlfriend because your girlfriend is waiting in paradise. This is आपका घूंघट तक तो हमने डाल दिया। अच्छे खासा इंडिया पूरा जो था, there was sexuality was not an issue in India. ये आए तुर्क इन्होंने घूंघट डाल के चले गए, अंधा करके चले गए। This is the True. real tragedy. तारिक जी एक लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मेरी तो चाय भी अभी अभी ये बताइए जाकिर नायक के साथ इंडिया कैसे डील करे? हाउ शुड वी अरे डील? उसको कॉमेडी चैनल पे डाल दें आप। I'm seriously, every evening there should be comedy night. मतलब आप लोगों को इतनी टेंशन क्या है? Can you imagine 9 o'clock जाकिर नायक आवर, उसमें ड्रामा करे, वो जो कपिल शो है उसको, कपिल शो को खत्म करें और वहां जाकिर नायक का क्लिप चलाया करे कपिल I से। hope the producers in India are very closely watching this advice. नहीं, आई एम सीरियस। ये जो सिद्धू और कपिल का जो शो आता है, जी जी इनक्रेडिबली फनी, ब्रिलियंट। उसमें सिद्धू के बजाय जाकिर नायक का एक चेहरा पहन के बंदा बिठाया हुआ, या What a उसको brilliant ना suggestion, Tarak ji. ऊंचा What पजामा absolutely- पहना के, लंबा कुर्ता पहना के, उसके फ्रंट टीथ बड़े करके, टोपी, अजीब सा क्रीपी सा आदमी नहीं है वो, उसको छोड़ दिया जाए स्टेज पे, बिल्ली कुत्ते सब भाग जाएंगे वहां से। हाउ कैन दिस मैन, यानी 10,000। मुझे तो दुख ये है कि इसके फैंस हैं। आई एम मोर हैंडसम देन। Without a doubt, Tarak ये ji. मिस जाकिर नायक कंपटीशन किया जाए, ये where women in burqas would come and ऐसे करके मिस जाकिर नायक, फिर एक मिस्टर जाकिर नायक कंपटीशन होना चाहिए बॉडी बिल्डर्स का। इसका मजाक उड़ा के send him. Chapter 1, line 2, 35, 92, 79, divided by 8, multiplied by 62, number 52, as I said. बाकी कोई पता नहीं किसको क्या कह रहा है ये आदमी। ऐसी गिनती घुमाता है। एक टर्म पता नहीं हिंदुस्तान में है नहीं, घन चक्कर कहते थे हम उसको। Ji ji. Thank you so much, Tarak ji. This has been such a brilliant session. I will now request Indranil ji
to हाँ please जी। summarize the brilliant session and the webinar we've had with Tarak ji. अरे इसको बेचारे कैसे समराइज करेंगे? दिन भर Thank you, Tarek. बोले क्या कर- Hats out to you. Do justice. Thank you so much. I'll give it to Indraneel now to go चाहिए on the नहीं summary. चाहिए। I mean, it's the best webinar I've seen. It's the best webinar I've attended. Seriously. Not only Zakir Naik, but the overall thing has been so well presented in the concept. But of don't you think we Indian should lives. do something with Zakir Naik? I think it's a very good idea. We हाँ, should put comedy that hour. suggestion across. If you can do something from UK, probably have some हाँ, funnies and just start it as a show here. First comedy show, then we'll move to a horror show. But something like that we have to do. But no, it's been an excellent webinar. I mean, the best webinar I've attended, Tariq ji. It was amazing. आपने जिस तरह से एज ए आम आदमी के हिसाब से जो बात किया है, जो नॉर्मल एज एन एवरेज इंडियन जो फेस करता है, जो समझा, इट वाज, आई थिंक इट इज द best way to understand things. And to start with, I think the most important thing was the way you said Indian diaspora. What are you doing? I think this is a big question mark in the overall Indian diaspora, not only in UK, but globally. हम खुश होते हैं, हमने इंडिया के गवर्नमेंट के पैसे से पढ़ाई किया है, वहाँ के पूरा एडवांटेज लिया है, आज यहाँ पे अच्छा कमा रहे हैं, फैमिली अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं? What are we giving back to India? Probably it's a very probing question. It's a very emotional probing question. What are we doing? And we should really look into this matter in a much more better way, because we can see India from outside. India mein kya ho raha hai, and what is the perception of India, and how do we change that perception of India vis-a-vis the lies of Pakistan, for example. And I think it's a very, very, very important question that you have raised. Second important thing, I think, to me, is what is Indian Muslims doing in India? You know, it's a very important question. आप इंडियन हो, आप मुस्लिम हो, और आप पाकिस्तान एफिनेटेड मुस्लिम हो, या आप अपने आप को अरब समझते हो, जो आपको कोई कुछ नहीं समझता है. And I think this is a social and a political social culture change that needs to happen in India, which will shift a few platonic things, which will have a few earthquakes, but that shift needs to be done. And I think it's a very important, if India has to survive as a nation, as India, I mean, this is a very, very important question, because अगर आपकी 25% से 30% पॉपुलेशन ये नहीं समझती आप इंडियन हो, तो वी आर इन a big trouble. Yes. आप India इकोनॉमिकली first. कितने भी बढ़ जाओ, It is being Indian first. It's not just Absolutely. being Indian. आपका धर्म पहले नहीं है, आपका पहले जमीन आपकी है. जमीन आता है. हाँ. Absolutely. अगर 25% पॉपुलेशन ये नहीं समझता है, तो वी आर इन trouble, definitely. And we understand that what you're saying about the Pakistani lie, and how we counter that, and that is, again, it's a big question mark. It's also needs a bit more of political leadership as a country, that how do you counter that, and how do you acknowledge that? I mean, whether it's the high commissions, whether it's the embassies, what are they doing as a representative of India abroad to counter that question? And it's been an eye opener. It's a very, very interesting webinar. I mean, I think one of the best webinar I've attended. And trust me, I take the Zakir Naik thing. I think it will be a good money churning opportunity. But thank you so much, Tariq. Take care. Thank you so much. for your Namaskar. time and effort.